We were studying ought to modal auxiliary, and already we finished affirmative sentence construction of ought to. So already I informed you it is very useful sentence construction. And what is the difference between should and ought to? Should indicates present advice and suggestion. Instead of this, ought to indicates politeness, namrapana, humbleness. Means if you talk with any person, so that time your tone must be polite, humble too. Okay, so that time that person likes your way of expression. So ought to indicates that sense. After that, social bindings, then moral duties. But here I would like to introduce you negative sentence construction of ought to. Okay, no doubt present modal auxiliary, that is same which ought to, but sentence construction, that is negative. Now you may ask, sir, how can we use ought to in the negative examples? So today we are to take the information about that rule. Yes, how should we construct the rule of ought to in negative? So first of all, subject, then ought, and here you should use not. नॉट कहां पे लगाना है? टू के बाद लगाना है क्या? टू के बाद लगाना है क्या नॉट? देखिए ought to, तो मैं नॉट टू के बाद लगाऊंगा क्या? नहीं, तो कहां लगाना चाहिए? ought के साथ. टू बाद में है. ओके, आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस. बात यहां पे ध्यान दो, बात ये आपको ध्यान में रखनी है कि ought और not ये साथ में आना चाहिए. आफ्टर दैट टू, और कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए ऑटंट. ओके, यस. तो मराठी में सेंटेन्सेस कैसे हो जाएंगे? मराठीमध्ये वाक्यरचना कशा होतील? करायला नको किंवा करायला नाही पाहिजे, जायला नको, जायला नाही पाहिजे, खायला नको, खायला नाही पाहिजे. आणि हिंदीमध्ये नहीं करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, नहीं देना चाहिए असं वाक्य असते. फक्त लक्षात ठेवा, सामाजिक जी जबाबदारी असते, आपली नैतिक कर्तव्य असते, ते आपण याच्यात सांगितलं पाहिजे. ओके, यस. तो आई विल टेक 3 एग्जांपल्स. एक आपके लिए मैं दूंगा, वो आपको करके दिखाना है मुझे. ओके, फर्स्ट सेंटेंस मला असं म्हणायचंय, लोकांनी कर भरणे टाळायला नाही पाहिजे किंवा टाळायला नको. लोगों ने कर भरना नहीं टालना चाहिए. मीन दैट इज आवर सोशल ड्यूटी, सोशल बाइंडिंग. ओके, एंड मोरल ड्यूटी. तो कैसे करेंगे? पीपल, अदरवाइज यू कैन यूज पब्लिक, नो डाउट. पीपल और पब्लिक, हाँ, यस, ought not to. हाँ, अब मैंने क्या किया था? भरायला टाळायला नाही पाहिजे, है ना. जो काही कर आहे वगैरे ते भरायचा जो आहे तो टाळायला नाही पाहिजे. तर यस, टाळणे. ऑलरेडी आय यूज्ड अवॉइड, निग्लेक्ट, इग्नोर, दीज वर्ब्स आय यूज्ड. सो हियर आय एम यूजिंग अवॉइड. अवॉइड टू पे टैक्स. हाँ, एक मिनट. Some students will use here, instead of to pay, they can use paying. That time you should not use to here. So sentence must be, people ought not to avoid paying tax. If you are using more than one taxes, okay, yes, people ought not to avoid to pay tax or paying tax. Yes. तो ये मोरल ड्यूटी होती है, सोशल बाइंडिंग होती है. ऐसी ही वाक्य रचनाएं यू शुड यूज विद द हेल्प ऑफ ought to, और यू शुड स्पीक. सेकंड सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आई वुड लाइक टू से, त्यांनी सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करायला नको किंवा करायला नाही पाहिजे. उन्होंने, इन हिंदी, उन्होंने सार्वजनिक स्थल पे धूम्रपान नहीं करना चाहिए. यस. अब ये कैसे करेंगे आप? बताओ.
दे, त्यांनी, उन्होंने. Okay. Oughtn't, oughtn't. I am using here contraction, my friend. Yes, they oughtn't. After that, to, हाँ, धूम्रपान करने, smoke. Yes, हाँ, सार्वजनिक स्थलों पे, सार्वजनिक ठिकानी, है ना. At public or common places. Common places, I am writing here. Common places. Look, कैसे हुआ वाक्य? They oughtn't. Here I used contraction. Oughtn't to smoke at public places or common places. That is our social duty, social responsibility. Okay. Yes. Last sentence. हाँ, देखो कौन सा सेन्स में बताता हूं, उसकी मदद से आपको समझना है. मला असं म्हणायचंय, आपण सण किंवा उत्सव साजरे करण्याकरिता पैसे उसने घ्यायला नाही पाहिजे किंवा घ्यायला नको. हमने त्योहार या उत्सव मनाने के लिए पैसे उधार नहीं लेने चाहिए. आपण म्हणतो ना, ऋण काढून सण करू नये, तो सेन्स मी याच्यात द्यायलो की सण उत्सव आपण साजरे केले पाहिजे, पण आपल्या आपल्या कुवतीनुसार. आपल्या व्हेरी गुड सेंस वी आर इंडिकेटिंग विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटेंस. तो क्या है देखो कि अब मैं सेंटेंस बनाता हूं. तो सेंटेंस बनेगा वी, देन ought not, expansion I am using here, to, we ought not to, पैसे उसने घेणे, उसने उधार घेणे, व्याजानं नाही म्हणला, उसने घेणे, borrow. हाँ, मनी. बाकी काय म्हटलं होतं? त्योहार मनाने के लिए, सण उत्सव साजरे करण्यासाठी. टू, टू साजरे करणे, सेलिब्रेट, टू सेलिब्रेट. हाँ, सण किंवा उत्सव. यस, काय म्हणतात इन इंग्लिश? द फेस्टिवल्स, द फेस्टिवल्स. Yes. Look, we ought not to borrow money to celebrate the festivals. देखो, instead of should, you should use here ought. क्योंकि ought की वाक्य रचना ये सेंस अच्छा देखे जाएंगे कि our social binding, moral duty and politeness you can indicate with the help of ought. So here I use negative sense. अब एक वाक्य आप मुझे करके दिखाएंगे. मला असं म्हणायचंय, छोट्या मुलांनी जे रहदारीचे रस्ते, मोठे रस्ते, मोठ्या रस्त्यांवर खेळायला नको किंवा खेळायला नाही पाहिजे. इन हिंदी, बच्चों ने या छोटे बच्चों ने रास्ते पे या बड़े रास्ते पे, ऐसा लो, नहीं खेलना चाहिए. तो ये सेंटेंस आपको यू हैव टू कंस्ट्रक्ट विद द हेल्प ऑफ ought not to. रूल फॉलो ही करना है आपको कुछ दिनों के लिए, अदरवाइज यू मे commit minor mistakes, but we are to avoid those mistakes. Okay friend, here I finished negative sentence construction. In the next video I will teach interrogative. I will stop here. Thank you.